Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are diving into a very interesting and somewhat concerning topic, Byju's. One of India's largest edtech company is in the spotlight again. This time it's not just about business but some serious questions surrounding ethics and transparency. I'll take you through what's been happening with Byju's, the ethical issues involved, and how this entire saga can be relevant for UPSC aspirants, especially for GS4 Ethics. So stay tuned because this will give you great insights and an example you can use in your answers. Alright, so here's what happened. Byju Raveendran, the founder of Byju, have been facing allegation about missing funds. That means he has taken lot of investment from investors, and now where did he use those money, those fund is untraceable. पैसा उठाया मार्केट से, इन्वेस्टर्स से, अब वो पैसा कहाँ चला गया, nobody knows, right? It cannot be traced. ठीक है, तो वो फंड मिस हो गया. This is what the new issue about Byju is. So recently reports surfaced claiming that some funds were untraceable. कुछ funds को trace नहीं किया जा सकता. These funds were supposed to have been raised from investors, but no one seemed to know exactly where they went. Raveendran finally addressed the issue and said that missing fund went towards a legitimate purpose. तो उनका जवाब ये था रविंद्रन का कि जो फंड है इट वेंट फॉर लेजिटिमेट पर्पस, उसका अच्छा यूज हुआ है. अरे तो अच्छा यूज हुआ बताना तो चाहिए ना, वेयर डिड द फंड गो, किस चीज में यूज हुआ है. दैट ही हैज नॉट सेड. ही हैज जस्ट सेड कि इट हैज बीन यूज्ड फॉर लेजिटिमेट पर्पस. Okay, he assured the public that these funds were used in the company's operations and nothing shady was going on. But naturally, this statement raises more questions than answer. कि clearly बताओ कहाँ गया, वो आपका पैसा नहीं था, वो investors का पैसा था, तो clearly बताओ कहाँ गया वो पैसा. So that he could not reply. तो sequence of event क्या है, क्या क्या हुआ? First is the fundraising part. Byju raised a lot of money, billions of dollars from investors. So this was seen as a huge success for the company. बहुत सारा पैसा उठा लिया, बहुत successful the company. But later people started questioning that some of the money has gone. Auditor, stakeholders, they all started raising these concerns. So this was the first issue. Second issue है कि auditors resigned. जिनका काम था check करना कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ use हो रहा है, उन auditors ने ही resign कर दिया. Okay, so things escalated when Deloitte, the company's auditor, resigned earlier this year. Deloitte claimed that they were not given enough information to do a proper audit. Deloitte को proper पूरा जानकारी नहीं मिला तो वो audit कैसे करेंगे, तो इसलिए उन्होंने resign कर दिया. So this is where the real ethical question starts creeping in. असली ethical issue यहीं पे आता है कि there is lack of transparency and lack of accountability, है ना, क्योंकि nobody knows where the money is going. Even the auditors are not getting proper information. So there is grave lack of transparency and lack of accountability. Third thing is missing funds. Finally, media reports suggest that significant chunk of money raised was untraceable. When that happened in financial world, alarm bells go off. Investors, the public and authorities wanted to know where is this money gone. ठीक है, सबके अलार्म बेल बजने लग गए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, पब्लिक हो, अथॉरिटीज हो, कि ये पैसा कहाँ चला गया. तो उसके ऊपर फिर रविंद्रन का रिस्पॉन्स आता है कि ये लेजिटिमेट पर्पस के लिए खर्च हुआ है. ओके, सो दिस वाज अ वेरी वेग रिस्पॉन्स. इट डिडंट काम एनी कंसर्न्स, इंस्टेड इट लेड टू मोर स्पेकुलेशन. फिर लोग और तरह तरीके के अजम्पशंस करने लग गए. ठीक है, आपको प्रॉपरली बताना ना कहाँ गया पैसा. तो इसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या है? व्हाट आर द एथिकल इश्यूज? द फर्स्ट एथिकल इशू इज Byju's मैनेजमेंट व्हिच लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. द मोस्ट ऑब्वियस इशू हियर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो अब अगर आपको कभी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे एग्जांपल लिखना है, यू कैन कोट Byju's मैनेजमेंट एज एन एग्जांपल. इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. द कंपनी फेल्ड टू क्लियरली एक्सप्लेन वेयर द मिसिंग फंड वेंट. ठीक है, स्पेशली ये मिसिंग फंड वाला केस आप मेंशन करना,
तब आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। विच रेजेस क्वेश्चन अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा लिया है, जिम्मेदारी है ना आपकी, उनका पैसा संभाल के रखना है आपको, तो वो जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई, तो यू डोंट इवन हैव अकाउंटेबिलिटी। सो डिड द मैनेजमेंट हैव मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम क्लीन अर्लियर? Absolutely, they had the responsibility first to manage the money and then come clean कि कहाँ पे पैसा खर्च किया. So from an ethical point of view, this relates to corporate ethics. Corporate ethics में भी जो mismanagement का अगर आपको example लिखना है तो इस example को आप लिख सकते हो. ठीक है, corporate ethics. Companies are responsible for ensuring that funds from investors are used properly and are fully accountable to stakeholders. Second issue बनता है यहाँ पे auditors का, who lack professional integrity. ऑडिटर की जिम्मेदारी थी हर चीज पूरी तरीके से निकालना और फिर प्रॉपर जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो सबके सामने लाना. Deloitte resigning adds another layer of ethical complexity. As auditor, their role is to ensure that financial statements are accurate and transparent. But they were unable to access sufficient information. तो ये दिखाता है कि बायजू ने पूरी तरीके से कोऑपरेट भी नहीं किया और इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, उन्होंने चुपचाप रिजाइन कर दिया. सो दिस शोज लैक ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी फ्रॉम द ऑडिटर साइड एज वेल. This brings us to professional integrity. Auditor have an ethical duty to verify financial accuracy. If they can't do their job due to lack of transparency, this reflects badly on both the company and the auditing process. तीसरा जो ethical issue आता है वो investors की तरफ से आता है. ठीक है, investor are the investors को झेलना पड़ा. They had to bear all these things. Okay, so their trust has been breached and the fiduciary responsibility of Byju, they did not fulfill even that. Investors, both large and small, trusted Byju with their money. पैसा देके भरोसा किया था, भरोसे के साथ पैसा दिया था. When funds go missing, it damages that trust. The company has a fiduciary responsibility. Fiduciary responsibility मतलब किसी ने अगर आपको पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपकी एक जिम्मेदारी है उस इन्वेस्टर के प्रति. उस जिम्मेदारी को फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. द कंपनी हैड अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट इन्वेस्टर्स मनी इज हैंडल्ड एथिकली एंड वाइजली. ठीक है, तो ट्रस्ट तोड़ा, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया. दिस इज अगेन वन मोर एथिकल इशू. ठीक है, तो इसको भी आप एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. और चौथा एग्जाम्पल जो है वो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड टुवर्ड्स पेरेंट्स. Okay, let's not forget that Byju's core business revolves around education, something that impacts millions of students and parents. Any ethical misstep, अगर कुछ भी ethical misstep वो लेते हैं, गलती करते हैं, especially funds के related, पैसे के related, that can affect the faith in the company. Company operates in education. एजुकेशन को लेकर उनका बिजनेस है, तो तब तो उनका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है. बिकॉज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन एजुकेशन हैव अ हायर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो बिकॉज देयर एक्शन इन्फ्लुएंस द फ्यूचर जनरेशन. जिनको पढ़ा रहे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि टीचर या टीचर की कंपनी ही इस तरीके से चोरी वाले काम कर रही है. सो फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स दिस हाईलाइट्स द एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस पे या स्टूडेंट्स, हमने एक सिलेबस में भी एक जगह है ना कि टीचर्स का क्या असर होता है, वैल्यूज कैसे देते हैं वो स्टूडेंट्स को. तो यहाँ पे भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि एक तरीके से तो टीचर ही था ना, बायजू एक कंपनी था बट इट वाज टीचिंग पीपल. तो टीचर ही किस टाइप के वैल्यूज अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है. सो फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट इट हाईलाइट्स द एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, हाउ द एक्शन ऑफ अ कंपनी अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक स्टूडेंट्स. ठीक है, सो दीज आर द 4 places where you can use this as an example. ठीक, so to sum it up, Byju is facing serious ethical challenges, whether it's about missing funds, lack of transparency, or impact on students and investors. This issue provides rich material for discussing ethics in corporate governance and professional integrity of auditors. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आप यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिटर्स, उनके ऊपर आप ये एग्जांपल्स यूज कर सकते हो. एंड दिस केस कैन बी एक्सेलेंट एग्जांपल इन योर आंसर्स बिकॉज
when you are discussing corporate ethics, especially when you are discussing corporate ethics, professional standards, and social responsibility. That is why I have put this case as an example video. Okay, so that's it for today's video. If you found this useful for your UPSC preparation, make sure to like, share, and subscribe. See you next time.